Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Tuesday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से जुड़ी हुई ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर ऑनलाइन चर्चा के लिए आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार उदयन रे। उदयन, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वेलकम उदयन। धन्यवाद। थैंक यू राजेश। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं राजेश लेख। Equity benchmarks rise for the third session in a row. Sensex closes at 40,544. Nifty settles at 11,897. Global stocks trade mixed amid deadline for a bill on stimulus approaches, and Europe reported record daily coronavirus infections. And gold falls below 50,900 rupees per 10 grams in the Delhi bullion market. घरेलू शेयर बाजार में लगातार तीसरे सत्र में लिवाली। सेंसेक्स 40,544 पर हुआ बंद। निफ्टी 11,897 दर्ज हुआ। अमेरिका में आर्थिक प्रोत्साहन विधेयक की अंतिम तारीख नजदीक आने और यूरोप में कोरोना पीड़ितों का दैनिक मामला बढ़ने का वैश्विक बाजारों में मिला जुला असर दिखा और दिल्ली सराफा बाजार में सोने का मूल्य 50,900 रुपए प्रति 10 ग्राम के नीचे आया। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मिले जुले रुख के बीच घरेलू शेयर बाजार में लगातार तीसरे सत्र में आज तेजी बनी रही। हालांकि प्रमुख सूचकांक मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। रियल्टी, दूरसंचार, आईटी और टेक्नोलॉजी सेक्टर से जुड़ी कंपनियों की शेयरों की लिवाली से बाजार में मजबूती दिखी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 113 अंक यानी 0.28% बढ़कर 40,544 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 24 अंक यानी 0.2% बढ़कर 11,897 दर्ज हुआ। विस्तृत बाजारों पर ध्यान दें तो छोटी और मझोली कंपनियों का प्रदर्शन सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में बेहतर रहा। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.47% लाभ के साथ बंद हुआ। स्मॉल कैप इंडेक्स 0.3% ऊपर आ गया। Equity benchmarks today logged modest gains amid mixed global cues. The key indices added mainly due to surge in realty, telecom, IT and tech stocks. The BSE 30 share index Sensex gained 113 points or 0.28% to settle at 40,544. The NSE Nifty 50 index also rose 24 points or 0.2% to settle at 11,897. Both indices rose for the third straight session. The broader market at BSE also climbed, outperforming the Sensex. The BSE Mid Cap Index rose 0.47% and the BSE Small Cap Index appreciated 0.3%. In the Sensex pack, HCL was the top gainer, which climbed 4.2%. Tech Mahindra, Asian Paints, Bharti Airtel and HDFC Bank were other top gainers, climbing above 1.7%. ONGC lost the most as it fell 2.7%. HDFC, Reliance, NTPC and Power Grid were other losers, which fell around 1%. In sectoral indices, realty stocks jumped 3.8%, while tech, telecom and IT sector stocks logged gains from 1.3 to 2.6%. On the other hand, oil As the and nation gas fights the declined COVID-19 pandemic, 1.3%, we while begin power with a and message energy of precaution sector to stay lost safe. around 1%. Overall, market breadth was positive at the BSE
as 1,373 shares rose and 1,316 shares fell. A total of 160 shares were unchanged. While Asian and European stocks traded mixed amid thin hope of fresh US stimulus and rising COVID-19 cases, Indian equity markets extended gains amid reports that active cases in the country have fallen below 7.5 lakh after 6 weeks. नजर डालें रुपए की स्थिति पर तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 10 पैसे कमजोर हुआ, 73 रुपए 47 पैसे के स्तर पर आ गया। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स 0.23% घटकर 93.21 पर आ गया। उदयन, बाजार में आज की गतिविधि पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। बाजार में हल्की ऐसी तेजी देखी गई है। 3 दिनों से लगातार फिर बाजार ऊपर की ओर उठ रहा है। किन अर्थों में ले रहे हैं आज की गतिविधि को? देखिए मनोज, जैसे आपने और राजेश ने जिक्र किया कि मिक्स क्यूज रहे हैं और आप देखेंगे अलग अलग मार्केट्स में रिस्पांस फैक्टर तो वही है। कोविड इन्फेक्शन से जुड़ी हुई बात है, यूएस में स्टिमुलस बिल के बारे में बात हो रही है, तो अलग अलग रिस्पांस रहा है और वो डिपेंड कर रहा है यहाँ पे काफी लोकल फैक्टर्स में, मतलब कंट्री रिलेटेड फैक्टर्स। हमारे भारत में जो मेरे हिसाब से जो हुआ है, ये कुछ रिजल्ट अच्छे आए हैं, उनकी परफॉर्मेंसेज अच्छी आ रही हैं, मतलब जितनी उम्मीद थी उनसे बेहतर आ रही है और उस वजह से एक ऑप्टिमिज्म सा थोड़ा बहुत है जो कि दूसरी खबरें जो आ रही हैं उसको नेगेट कर रही है। दूसरी बात है मनोज, हमारे यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन ये भी है कि हम आंकड़े वो भी आ रहे हैं कि कोविड से जुड़े हुए जो इन्फेक्शंस हैं वो थोड़े से कम होते हुए नजर आ रहे हैं, थोड़े नहीं काफी सिग्निफिकेंटली कम होते हुए नजर आ रहे हैं, तो उससे एक ऑप्टिमिज्म जरूर बढ़ता है। जबकि बिल्कुल ऑपोजिट यूरोप के केस में सही है, सच है कि वहाँ पे बिल्कुल ड्रामेटिकली वहाँ पे और अमेरिका में बढ़ रहा है और वहाँ पे स्टिमुलस बिल से जुड़ी हुई जो सेंटिमेंट है वो वहाँ पे मार्केट्स को दबाव में रख रही है। तो हमारे और उनके केस में ये अलग अलग मार्केट्स में अलग अलग रिस्पॉन्सेज रहा है और ये इसी को इस नजरिए से और या इस दृष्टि से हम उसको देख सकते हैं। Then the true economic recovery is going to be visible over the next 12 to 8 months. How should one navigate through one's portfolio? Should one stick with the leaders, IT or pharma, or should one bet on the contra theme, which is the banks? And all these three have done pretty well today. Well, Rajiv, it pretty much depends on your risk appetite. One thing, of course, I would say that if you're investing in equities, which you must, because things can only go better from here. There's no information which is indicating to us that this crisis or this difficult period is going to last for a very long time. We're going to recover from it, but we will be licking our wounds and tending to our scars and stuff like that. But we'll see through it. It's almost everybody's unanimous or agreed to that. So what the most important thing, Rajesh, would be is if you have a stomach for risk, if you think you can handle the ups and downs, then you would go for the areas that you just talked about. You talked about banks. Because tomorrow, if there is another wave of infection in some part of the country, God forbid, we don't get as great information or news in India, then those stocks will go, they will experience the volatility. However, if you think that, well, no, I want to stay on the, stronger side, then I go with the leaders. I bet on the consumption side. That means I go for FMCG. As you would have seen HUL and some of the other. Yes, they did pretty well. They did pretty well. So you know that people are going to have biscuits. They are going to do the shaving. People are going to take medicine. So some of those themes people are going to be going in terms of online streaming content. If that is coming in, any online business which is getting listed, those are the things that you're going to look at. However, one larger perspective is very important, that when you're looking at it, don't look at making money in the next 1 year, because then you'll be at greed. But if you have a slightly longer term horizon, ideally say about 5 years or so, I mean, in stocks, what happens is it goes up and down in the initial years, and then it starts
settling down. I'm talking about an investment you make today. It might go for a fluctuation in the next even 12 months, 18 months, 24 months. But as we keep moving ahead, so we are at 2020, investments that you make, think that, you're not going to touch that money before 2025. You might move from one stock to the other. That's fine. But you're not going to encash it. If you think like that, then there's a far better chance of you riding on this recovery, which almost everybody is agreed on. We know that it's going to agree. We are not going to clock these numbers. So then you get that benefit. But if you're looking to make a quick buck, then you'll always be at a disadvantage compared to, seasoned traders who got more information, they can understand better, they can stomach the risk. So you need to play to your strengths, and that's what individual investors can do. Of course, they can also play it even safer and go to mutual funds, or even in mutual funds, they can look at index, because we know that index is going to make a rebound sooner or later. It has done pretty well so far compared to where we were. So those are some of the ways in which investors could take a look at. उदयन, यदि हम आज की गतिविधि पर एक बार फिर आपका ध्यान आकृष्ट करेंगे तो समझना चाहेंगे रियल्टी सेक्टर में आज 3.8% की शानदार तेजी देखने को मिली है। इसे तात्कालिक आज का उछाल समझा जाए या पिछले दिनों से जो केंद्रीय बैंक की नीतियों में थोड़ा सा बदलाव आया है उसका असर माना जाए, या कोई खास कारण रहा आज की बढ़ोतरी के पीछे? मनोज, ये सब कुछ जो आपने कहा है सारों का ही कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन यहाँ पे रहा है। पर एक चीज हमें याद रखना पड़ेगा, ये हमारा त्योहारों का सीजन है जहाँ पे खरीदारी होती है। तो अब आप एक नए घर में, ज्यादातर हमारे देशवासी जो है नए घर में इस त्योहारों वाले सीजन में जब कुछ महीने हैं जहाँ पे खरीदारी नहीं की जाती है, वो खत्म होने के बाद जब वो शुरू होता है, वो पीरियड अंत हो जाता है, तब हम खरीदारी करते हैं, बड़ी खरीदारी करते हैं, गाड़ियां, मकानों में अब हम गृह प्रवेश करना चाहते हैं। तो ये एक चीज है जो कि हो रही है। दूसरी चीज है जिन्होंने लोगों ने टाल के रखा था। कई लोग क्या होता है कि आप इकोनॉमिक क्राइसिस में या मुश्किल वक्त में आप टाल देते हैं, आप पोस्टपोन कर देते हैं। तो क्योंकि अब बादल जो है थोड़े थोड़े छटने लग गए हैं, लोगों को लगने लगा है कि नहीं, इतनी मुश्किल नहीं है। तो अगर लोन का जो हिसाब किताब है वो ठीक ठाक बैठ रहा है, रियल्टी के जो कंपनीज हैं वो अच्छे स्कीम्स दे रहे हैं आपको, तो इस वजह से, इसकी कॉम्बिनेशन की वजह से ये आप पा सकते हैं। पर देखने वाली ये बात होगी मनोज कि ये ट्रेंड बना रहता है कि नहीं। मान लीजिए ये नवंबर में भी बना रहता है, क्या ये दिसंबर में भी बना रहेगा? और यही सवाल सब पूछ रहे हैं कि ये जो अभी जो हम थोड़ा सा उछाल देख रहे हैं, थोड़ी सी रिकवरी देख रहे हैं, ये सस्टेनेबल होगी कि नहीं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। Udayan, there are a bit of a longish question I'm going to be asking you on the trends that are playing out in the market, and there's a lot of talks about the global super cycle coming up, with the economy gaining to the tune, the world economy gaining to the tune of 100 trillion worldwide. So if that be the case, where will the super cycle come up and the profit pools be created in India? How will that happen? Well, Rajesh, I'm not pretty much clued into the phenomenon that you're talking about. But yeah, there is going to be, if you look at point to point, there will be points when you're going to do very well, right? But Rajesh, we also need to remember that for 6 months or 7 months or 8 months, we were not at the optimal level. So there's a deficit that we will be covering, and that deficit had to be funded from a future earnings. So what happened is, like everybody, people who had the savings, they used up the savings. People who could borrow, they borrowed. Governments borrowed. Now they'll have to pay for that, Rajesh. Now that is what's going to happen. You are going to end up, the governments are going to end up trying to pay up what they have borrowed, right? But yes, there are companies which have already made supernormal profits, like some of the top American banks. They have made fabulous amount of money in investment banking. Now that money, they are shoring up their capital reserves, etc., and capital adequacy. They are doing that. So that is how it's going. That is how it's going to shoring things up. But because till we actually get out of this clouded sort of environment,
where, there are storm clouds. We're not quite sure whether they're off or not. Till then, people are going to move in, I suspect, slightly gingerly. Even if some companies or some governments recover well, like in the case of China, they have just clocked about 4.8 or 4.9% for the preceding quarter. But even then, because they are everybody's licking their wounds. There was a period when nothing was really happening or very little was happening. You're covering that. There's a deficit. It's like a cricket match. In the first innings, you didn't do well, and now in the second innings, you're covering the deficit. So that period is going to be, be there for quite some time, Rajesh. Okay, Udin, the global super cycle that I'm talking about is based on the two trends. One, the large manufacturing supply chain companies coming into India and setting up capacity. And two, the services boom because of geo-neutrality. You don't need to have a H-1B visa anymore. You can function from anywhere. And you see, that is a significant boom in India. People are quite bullish on India on this as this plays out. Right, Rajesh, there's no doubt that people, before, you're very rightly pointed, before the whole thing was how to have an efficient supply chain. Now the term has changed into a secure supply chain. You would rather be secure than have a very efficient supply chain which is lowest possible cost, because you don't want your supply chain to be disturbed. And India, if it becomes, and it looks like it's becoming, a part of the global supply chain in a much bigger way than it was pre-COVID days, outbreak days, then, some of the things that you are talking about will happen. But Rajesh, I would like to point out some of the other countries are slightly better placed, and you can already see the data that's coming in. Like, for instance, a country like Vietnam is already booming simply because they've been able to, substitute, be part of that new trend that you just talked about. They're doing really, really well. And of course, again, the whole thing is coming back to how well we control this current pandemic situation. Vietnam has been able to do it very well. It's been cited everywhere as a great example. They managed to control it well. They didn't take too much of hit, and as a consequence, they're doing very, very well. In our case, we have taken a little bit of hit. We are a different country that is far larger, far more complex. But, we can also take advantage, but probably we will not be the first in the queue. We'll probably be through our size and adaptation, we'll catch up. But then there's a work cut out there. It's not going to fall into a lap. आइए अब चलते हैं वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले नजर डालते हैं एशियाई शेयर बाजारों पर, जहां मिला-जुला रुख देखने को मिला है। अमेरिका में आर्थिक प्रोत्साहन विधेयक की अंतिम तारीख नजदीक आने और यूरोप में कोरोना पीड़ितों का दैनिक मामला एक बार फिर से बढ़ने का निवेशकों पर असर आज बाजार में दिखा है। एक और निवेशकों की सक्रिय भागीदारी से दक्षिण कोरिया का कोस्पी और चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स दोनों सूचकांक 0.5% बढ़त के साथ बंद हुए हैं। वहीं हांगकांग का हिंग सेंग 0.1% की मामूली बढ़त में रहा। दूसरी ओर बिकवाली के दबाव में जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.4% घाटे में रहा। सिंगापुर के स्ट्रीट्स टाइम्स इंडेक्स में 0.6% की गिरावट हुई। यूरोपीय बाजारों की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक प्रमुख बाजारों से मिला जुला रुख दिखने को आ रहा था। एक और लंदन का FTSE 100 0.4% और फ्रांस का CAC 40 0.5% ऊपर चल रहे थे। वहीं जर्मनी का डेक्स 0.3% नीचे कारोबार कर रहा था। And in the US, the Wall Street's main three indices plunged yesterday as investors worried that they might not see a coronavirus economic stimulus deal before the 3rd November presidential election. The Dow Jones Industrial Average lost 1.4%, the S&P 500 declined 1.6%, while the Nasdaq Composite Index tumbled 1.7%. It seems the US and also the European markets have to take what the Prime Minister Modi just gave out to us live a short while back, and he said, "Jab tak dawai nahi, tab tak dhilai nahi." You know, Udhayan, if that doesn't happen, the cases will continue to come up, and we will continue to be talking about the stimulus, and we will continue to be locking our countries. Well, Rajesh, we are now at a position where we cannot,
lockdowns are not really going to work because things have generally spread, and that's typically what happens in the pandemic. You come to a stage where just locking yourself up is not going to help you medically, right? And also economically, you cannot sustain it. So we have reached that stage, and nobody's talking about it. The reason why, in my opinion, we rightly did what we did, and we took so much of pain, Correct. all of us, was because we had to give our doctors and medical people and our law and order and everybody else, the government, some space and time to get ready. Now, Rajesh, one of the things why things are not going to be, in my opinion, are going to get better. They will not get better dramatically fast, super fast, but they'll get better because we are, as a people, as government, as systems, we are learning to live with the virus, right? And we are being able to figure out how we can deal with it better, how we can respond to it better. And over a period of time, it's not going to be as bad. So it's not like making a model that some people were doing and apocalypse was being predicted. That really, I don't think is going to be happening. But, we obviously, to prevent these disruptions, as the Prime Minister very rightly said, because the moment you become reckless and careless, we're seeing across the world, Rajesh, whenever people are dropping their guard, they're having to suffer quite a bit. So that option is not even on the table. But what we need to do is we have to keep the guard so that we can recover faster. Remember, Rajesh, we've got a lot of population who are right at the margin. We have to do it for them. People have to get back to their jobs and earn well, so that the government gets taxes and go back to dealing with the problems of the people who are disadvantaged. जी. So we have got a greater responsibility out there. उदयन, प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में आज ये भी कहा है कि आर्थिक पुनर्बहाली होने लगी है और कुछ क्षेत्रों में फिर से चक्के चल पड़े हैं. किन क्षेत्रों में आप देख रहे हैं कि एक और जहां दुनिया के कई देशों में, कई महादेशों में कह लें कि एक बार फिर से कोरोना के वायरस बढ़ रहे हैं, उसमें अपने यहाँ किन क्षेत्रों में आप देख रहे हैं कि वहाँ आर्थिक पुनर्बहाली तेज गति से होने वाली है, तेज गति से होने के आसार हैं? देखिए मनोज, हमारा ऑटो सेक्टर जो है, वो एक तो उसमें एक इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त आया था. ऑटो सेक्टर हम जानते हैं कई और चीजों को अपने साथ लेके चलता है. स्टील को भी लेके चलता है, फाइनेंस को भी लेके चलता है, काफी चीजें, इंजीनियरिंग को लेके चलता है. वहां पे हम कई अच्छे आसार देख रहे हैं. हाँ, अभी हमें काफी रास्ता आगे चलना है, पर वहां पे अच्छे आसार दिख रहे हैं. हो सकता है कि ये पीरियोडिक हो, ये त्योहारों का मौसम है, वहां पे वो हम देख रहे हैं. कुछ जो सर्विसेज बंद पड़ी थी, जैसे हॉस्पिटैलिटी थी, फिल्म हॉल थी, ये सर्विसेज जो कि बहुत बुरी तरीके से हिट हुई थी, तो धीरे धीरे करके खोला जा रहा है. तो वहां पे जो कि हमारा तेज, जैसे कि हम जानते हैं, सर्विसेज को ही हमारा जीडीपी का आधे से ज्यादा जीडीपी वहीं से आता है. तो वो जितना वो करेगा, वहां पे तो हम थे ही अच्छे. जी, दूसरी जहां पे हम देख रहे हैं अच्छा इम्पैक्ट देख रहे हैं, वो आईटी है, जिसके रिजल्ट के बारे में आप प्रोग्राम में चर्चा कर रहे हैं. Okay. Moving on, India's agricultural exports have recovered from a pandemic-induced decline. Exports of major farm products stood at 53,000 crore rupees in the 5-month period between April and August 2021, a rise of 14.8% compared to the corresponding period last year. During the April to August period, farmers gained from higher exports of rice, wheat and sugar. Exports of basmati rice, a big-ticket export item among cereals, during April-August rose 8.2% from the year-ago period, while the value of non-basmati rice exports grew 91.3%. कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई एक और खबर. देश में खरीफ फसल 2020-21 के धान की खरीद प्रगति पर है. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और केरल में खरीद प्रक्रिया तेजी से चल रही है. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि अब तक 98 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदा जा चुका है. इसके लिए 8,54,000 किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में 18,539 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है. धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 18,880 रुपए प्रति मीट्रिक टन है. Steel Minister Dharmendra Pradhan today said that the government has taken a lot of initiatives which will foster steel usage in rural economy. Addressing a webinar on Atmanirbhar Bharat, Mr. Pradhan said government has set up the target to produce ethanol from rice.
He said several distilleries and refineries will be set up for this, which will give a boost to the steel industry. The minister pointed out that 1 lakh crore rupee agri-infrastructure fund is being dispersed and several sectors have been identified as priority sectors. He added that 15 million metric tons compressed biogas will be produced in the coming 5 to 6 years. Mr. Pradhan said these will all lead to increased steel usage and the target is to raise the 74 kilograms per capita steel consumption further. बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया आपकी लेना चाहेंगे कृषि निर्यात पर। कृषि निर्यात में उल्लेख along with the steel और स्टील क्षेत्र पर भी आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों को बढ़ावा देने में मदद करेगा यह क्षेत्र, स्टील मंत्री कह रहे हैं। देखिए, ये मनोज जी बहुत ही हार्टनिंग डेवलपमेंट है एग्री एक्सपोर्ट्स, और वो देखिए पिछले साल के कंपैरिजन में, ये हम पिछले 6 महीने के कंपैरिजन में नहीं करें तो ये हमें एनकरेजमेंट देगा और एग्री एक्सपोर्ट्स में और हमें देखने पड़ेंगे कहाँ हम कर सकते हैं। जितने जो बॉटलनेक्स है, जो सप्लाई चेन बॉटलनेक, पोर्ट तक जाने का जो हिसाब किताब प्रॉब्लम्स कई एक्सपोर्टर्स को हो रहा है वो सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। जहाँ तक स्टील की बात है, ये हमारे जो रिकवरी है, हम जो रिकवरी करेंगे उसका एक बहुत बड़ा पिलर बनेगा, क्योंकि स्टील इतना फंडामेंटल इनपुट है, उसी के थ्रू वो एक बहुत इम्पोर्टेंट पिलर बनेगा हमारे रिकवरी के लिए। और सरकार ने सही मायने में अच्छे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक इम्पोर्टेंट एरिया को चुना है फोकस के लिए, जो कि मुझे लगता है रिजल्ट जरूर दिखाएगा। Moving on, the oil prices were trading in a narrow range today and logged marginal gains. The crude prices remained almost steady, mainly due to concerns that a spike in COVID-19 cases in the United States and Europe will continue to be a drag on demand in two of the world's biggest fuel-consuming regions. In intraday trade, Brent crude prices were trading around $42.70 per barrel, while WTI crude prices were around $41 per barrel. Coronavirus is here to stay, Udayan, for some time till we find an appropriate medicine for it. What will happen to the oil prices? Because if the demand does not pick up, I think we will continue to be in this range. Rajesh, not only that, I mean, to add to the pressure on the producers, there is going to be a whole new focus, whole reinforced focus, shall I say, on clean energy. So, as you can see in the United States, it's an election issue. People are talking of focusing on clean energy. India has made, strides. It's got into this solar alliance. There's so many things that are being done. So, it's fossil fuels, and especially the oil prices that you're talking about, it is going to remain under pressure for a fairly significant period of time. I mean, it's a larger, long-term trend that we're looking at. आइए चलें सर्राफा बाजार। दिल्ली सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की चमक फीकी रही। सोना 268 रुपए सस्ता हुआ, 50,860 रुपए प्रति 10 ग्राम की मूल्य पर आ गया। वहीं चांदी 1,126 रुपए घटकर 62,189 रुपए प्रति किलो रह गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने और चांदी की कीमतों में नरमी का असर घरेलू सर्राफा बाजार में भी दिखा है। उधर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने का मूल्य थोड़ा सा कम होकर $1,908.20 प्रति आउंस पर रहा। चांदी भी $24.70 प्रति आउंस के स्तर पर आ गई। बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया, बहुत संक्षिप्त। किस दिशा में जाएगा सोना? देखिए, अभी जैसे आर्थिक प्रगति, इकोनॉमिक ग्रोथ का अच्छा डेटा आएगा, आप सोने में के ग्रोथ में वो उछाल नहीं पाएंगे जो आपने साल की शुरुआत में देखी। बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से उदयन हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। Thank you, Udayan. धन्यवाद। Thank you, Rajesh. And before we close, the headlines once again. Equity benchmarks rise for the third session in a row. Sensex closes at 40,544. Nifty settles at 11,897. Global stocks trade mixed amid deadline for a bill on stimulus approaches, and Europe reported record daily coronavirus infections. And gold falls below 50,900 rupees per 10 grams in the Delhi bullion market. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra.